Good morning everyone. Welcome to the lecture of DRCS. In the last lecture we have calculated design of a column. So we will move further in this lecture. Today we are going to do design of a footing. So for designing of a footing we have already calculated load on footing. So these are the design data. Total factor load on a footing will be a 2325.8 kilonewton. Size of the column is 300 mm by 600 mm. Bearing capacity of the soil is 200 kilonewton per meter square. M20 and Fe415 are used. So first step of actually you have already studied about how to design a footing in a elementary structure design. So you all know how to calculate the example of solving a design of a footing, but we will do this again in this example. So let's start. First of all we have to calculate the size of the footing. So how we can calculate the size of the footing? So first of all we have design working load, right? So first of all, for finding a design working load we will divide by 1.5 with the factored load. So we will get a design working load 1550.5 kilonewton. We will add 10% as a self load of footing, so that is a 155 kilonewton. So total working load is a 1705 kilonewton. Now we will find the area of a footing required. So here soil bearing capacity is 200. So we will do total load divided by a SBC. So we will find the area of a footing required. So here area of the footing required is 8.53 meters square. As the footing is a rectangular, size of footing may be selected such that the effective cantilever projection on both sides is equal. So difference between a dimension of the column will be a 0.3 meter. If B is the width of the footing, then B into B plus 0.3 is equal to 8.53. This is the equation for finding a B. Right, after solving this equation we will get B is 2.77, so it's maybe 2.85 meter. So our total D is B plus 0.3, so B is 2.85 plus 0.3, so our small d will be 3.15 meters. So size of the footing will be 2.85 by 3.15 meter. So area of the provided footing will be a 8.98 meter square, that is greater than 8.53. that means our size of footing is okay. The next step is to find the net upward pressure. For finding a net upward pressure we have a small p. So equation for the small p is a factored column load divided by a area of a footing provided. So here factored column load is a 2325.8 and our area of the footing provided is 8.98. So P will be a 259 kilonewton per meter square. Now we will find a bending moment. So for calculating a bending moment, first of all UDL along the x direction. So UDL along x direction is P into 2.85, same as we will find a UDL along a y direction, and that will be a load into a y direction length. So that is a 3.15. So UDL along x is a 738.15 kilonewton per meter, and UDL along y direction is a 815.85 kilonewton. So the critical sections for a bending moment are taken on the faces of the column XX and YY section. So you can see in this. So MUY will be a WL square by 2. Here W is in a y direction, W is, we will take a UDL along a x direction, and while finding a MUX we will take a W along a y direction. So with this equation we can find out the MUY and MUX. So ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब हम लोग मोमेंट MUY फाइंड आउट कर रहे हैं तब हमें x डायरेक्शन का UDL यूज करना है, एंड व्हेन वी आर फाइंडिंग MUX देन वी विल टेक UDL from the y direction, right?
So equation for the MUy is 0.138 FCK B into dy square. So B is 300 plus 2 into 75, so that is 450. So MUy is 600 into 10 raised to 6. 0.138 into FCK is 20, B is 450, and dy. So from this we can find the dy. So here dy is 695, so we will try more than a 695 mm. So here try overall depth 800 mm. So dy will be a 800 minus 50 minus 6, that is a 744 mm. Here we have assumed 12 mm dia bar, so 6 is 5 by 2, that means a 12 by 2. Dx will be a 744 minus 12, so that is a 732 mm. Average depth will be a 744 plus 732 divided by 2, that means that is a 738 mm. Now we will assume the edge depth, that is 230 mm. Now we will provide a reinforcement along the x-axis. So in a rectangular footing, the reinforcement in a longer direction shall be spaced equally across the full width of the footing, right? So we can find reinforcement from a SP16. So first of all we have to calculate a percentage of the steel. So if in this you can use a SP16 code, that's why first of all you have to calculate MUy अपॉन बी डी स्क्वायर. ये आपको ध्यान रखना है कि एक्स डायरेक्शन के अंदर जब हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम लोग एम यू वाई यूज़ करेंगे, और जब हम लोग वाई डायरेक्शन के अंदर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो तब हम लोग क्या करेंगे, एम यू एक्स यूज़ करेंगे, right? So here MUy upon BD square is a 600 into 10 raised to 6 divided by 450 into 744 square, that is a 2.40. Percentage of the steel is a 0.798 percentage. We have found this value from SP16 page number 48. From the percentage of the steel we will find the area of the steel, so that is a PTBD upon 100. Here B is a 450 and D is a 744. So our area required for the steel is a 2671.70 mm square. So here we will provide a 12 mm dia bars. So we will find the number of bars from the SP16. So here 24 numbers of the bar are required. So provided 12 numbers of 12 dia, 24 numbers of bar, and here area of the steel provided is a 2715 mm square. After providing a steel, we have to check for cracking, check for one-way shear, and check for two-way shear. So first of all we will check for a cracking. So this clear distance between bars will be a 2850 minus 100 minus 12 divided by 23. We have taken 23 because number of bar is 24. You all know how to check for a cracking, right? This detail is given in IS 456-2000 page number 46. So center to center distance between a bars would be a 107.4, that is a 119.04 minus 12. 12 is the diameter of the bar which we have used in a steel. So 107.04 mm is less than 180 mm, that means that is okay. सेम वे हम लोग वाई डायरेक्शन में भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे रेनफोर्समेंट और उसको भी चेक फॉर क्रैकिंग करेंगे. सो सिंस द डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ द फुटिंग 3150 minus 2850 is a 0.3, that is a very small amount. So there is no need to provide a bands and provide a reinforcement uniform spacing in a y direction, right? हमें सेम रेनफोर्समेंट ही प्रोवाइड करने हैं वाई डायरेक्शन में. सो अगेन यहाँ पे हम लोग एम यू एक्स बी डी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो एम यू एक्स अपॉन बी डी स्क्वायर की वैल्यू के लिए हम लोग वाई डायरेक्शन में हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स वी विल यूज़ एम यू एक्स. सो एम यू एक्स अपॉन बी डी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल रही है 1.65. सो ये वैल्यू के ऊपर से हम लोग IS 456-2000 पेज नंबर 46 में से परसेंटेज ऑफ द स्टील फाइंड आउट करेंगे. परसेंटेज ऑफ द स्टील हमें मिल जाएगा. उसके बाद हम लोग एरिया ऑफ द स्टील फाइंड आउट करेंगे जिसमें PTBD अपॉन 100 AST
So AST आपको मिला 2810.90 mm square. So here we will provide 25 numbers of dia, 25 numbers of bar and 12 mm dia. So our provided area of the steel will be a 2827 mm square. Now we will check for a one way shear. So one way shear हम लोग d distance पे provide find out करेंगे. So critical section for one way shear is taken at distance d, that is a 744 mm from the face of the column, right? Face of the column से 744 mm, मतलब कि end of the column से वो कितना हो जाएगा 531, right? और you can see all the dimension in this figure. This is 600 mm column width and this is 3150 footing width, and this distance will be a 1275, right? So first of all we will find y dash divide by 531 is equal to 570 divided by 1275. So what is the 570? So 570 is this distance and 1275 is this distance. So we can see in this figure, if y bar divide by 531 then is equal to 571 divided by this distance 1275. So from this we can find out the y dash. So y dash is a 237.38 and d dash is equal to y dash plus 230 minus 50 minus 6. So here you can see y dash plus 230 माइनस 50 क्या है, 50 आपका कवर है और 6 क्या है, क्योंकि 12 mm डाया का बार प्रोवाइड किया है इसलिए हम लोग यहाँ पे 12/2 माइनस करेंगे. सो आपकी जो टोटल विड्थ है उसमें से ये माइनस हो जाएगा प्लस ये y डैश, मतलब कि आपका d डैश हो गया 41138. और आपको पता ही है कि b डैश, अगर ये b डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसका इक्वेशन है विड्थ ऑफ द कॉलम प्लस 2d, राइट. सो यहाँ पे विड्थ ऑफ द कॉलम है 300 प्लस 2 और d की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट की है 2d, वो है 744, राइट. तो b डैश आपका हो गया 1788 mm. नाउ वी विल फाइंड आउट द vu. सो vu क्या है, SF एट अ क्रिटिकल सेक्शन, मतलब कि ये जो आपका क्रिटिकल हैचेड एरिया है उसका सेक्शन है, उसका शेयर फोर्स वो है vu. सो vu फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, p इंटू हैचेड एरिया, मतलब कि ये जो हैच एरिया है उसको p से मल्टीप्लाई करेंगे. सो p इंटू हैच एरिया, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा 2.85, मतलब कि width into this 0.531 into 259. सो आपका vu हो गया 391.95 किलो न्यूटन, राइट. सो ये आप लोगों ने vu फाइंड आउट किया. अब हम लोग क्या करेंगे, टाउ v एंड टाउ c फाइंड आउट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाउ v फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है vu माइनस mu अपॉन d डैश tan बीटा अपॉन b डैश d डैश, राइट. सो ये इक्वेशन के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, बीटा की वैल्यू चाहिए, mu चाहिए, बाकी की सारी डिटेल हमारे पास है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल mu एट क्रिटिकल सेक्शन अगर फाइंड आउट करना है तो इक्वेशन है हमारे पास WL²/2 और यहाँ पे हम लोग L कौन सा लेंगे, जो हैच एरिया है वो L लेंगे, राइट. सो W है हमारा 738.15 और हैच एरिया आपका आएगा 0.531 स्क्वायर, राइट, डिवाइड बाई 2. सो आपको mu मतलब कि मोमेंट एट क्रिटिकल सेक्शन आपको मिल जाएगी 104.06 किलो न्यूटन इंटू मीटर. नाउ वी विल फाइंड tan बीटा, दैट इज 570 डिवाइड बाई 1275. हाउ वी कैन कैलकुलेट टाउ बीटा, सो वी विल सी इन दिस फिगर. सो फॉर कैलकुलेटिंग दिस टाउ बीटा we will do this divide by this distance, right. 570 divided by 1275. So the tau beta is 0.447. For calculating the tau v, we have this equation vu minus mu upon d dash tan beta upon b dash d dash. So we will put all the value in this equation. Vu is 391.95, mu is 104.06 divided by this tan beta 0.411.
into 0.447 into 10⁻³ divide by b dash and d dash. सो टाउ v इज़ 0.38 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ये इक्वेशन आप लोगों को पेज नंबर 72 IS 456/2000 में ऑलरेडी दिया है. सो आपको इक्वेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद हम लोग परसेंटेज ऑफ द स्टील फाइंड आउट करेंगे. सो PT फाइंड आउट करने के लिए अगेन हमारे पास जो हम लोगों ने एरिया प्रोवाइड किया था स्टील का, उसके ऊपर से हम लोग PT भी फाइंड आउट कर पाएंगे. सो PT हमें मिला 0.369%. सो PT और हमारे पास है, तो हम लोग टेबल नंबर 19 पेज नंबर 73 IS 456/2000 में से डायरेक्टली टाउ C की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे ग्रेड ऑफ द कंक्रीट को यूज़ करके. सो यहाँ पे हमारा टाउ C है 0.42, दैट इज़ less than greater than a tau v. So since tau v is less than tau c, that means our one way shear is okay. Now we have to check for a two way shear. So here we will take average depth, that is a 738 mm. So for a two way shear, critical section is taken at a distance d/2 from the face of the column. So you can see this is the distance, d/2 distance, that is a 369 mm. So here again we will take this y dash divide by 906 and 570 divide by 1275. So here y dash will be a 405 mm. So d dash is equal to y dash plus 230 minus 50 minus 12 minus 6. Here we will do this width of the this foundation minus cover minus diameter of the bar minus diameter of the bar 2, right? So we will put all the values here and we will have a d dash is 567 mm. Now for calculating a VU, we have equation P into H area, right? So P is 259 and H area is what we will do, we you can see in this figure what we will do in this. First of all we will take all over area minus we will calculate this area and we will find a hatchet area. So all over area is 3.15 into 2.85 minus this hatchet area, so that is a 1.338 into 1.038, so that is a 1965.46 kilonewton. And we have equation for the tau V, that is a VU upon B0 into D dash. So V0 is a 4752, as equation of B0 is a 2 into 1338 plus 2 into 1038. So you can find out the value of B0. So we will put all the values in equation of tau V and we will get a tau V 0.729 Newton per mm square. Now in this we have to find out the tau C dash. So for calculating a tau C dash, there is equation Ks into tau C, and Ks is a 0.5 plus beta C. So we can find out the beta C by a 300 upon 600. So we will put all value in this equation, 0.5 plus 300 by 600. So Ks is 1. So this all criteria is given in IS 456/2000 page number 58 and 59. So here we can find the Ks1. So we can find out tau, and equation for the tau C is a 0.25 under root FCK. So here FCK is a 20 and we will put value of FCK in this equation and we will have a tau C 1.11 Newton per mm square. So we will put a value of Ks and tau C in equation of tau C dash. So tau C dash it will be a 1.11 Newton per mm square. Here tau V is less than tau C dash, that means our design is okay for a two-way shear also. सो गाइज़ यहाँ पे आपका एग्जाम्पल ख़त्म होता है G+3 का. सो बेसिकली हम लोगों ने G+3 का जो एग्जाम्पल देखा उसमें हम लोगों ने क्या किया, कौन से पार्ट की डिज़ाइन की. सबसे पहले हम लोगों ने वन वे स्लैब की डिज़ाइन की, उसके बाद हम लोगों ने टू वे स्लैब की डिज़ाइन की,
3 वेज, और उसके बाद हम लोगों ने कंटिन्यूअस बीम एट अ टिपिकल फ्लोर लेवल उसकी डिज़ाइन की, हम लोगों ने एक कॉलम की भी डिज़ाइन की, और ये लास्ट हम लोगों ने फुटिंग की डिज़ाइन की, राइट। सो आप लोगों को एग्जांपल में ये सारी डिटेल्स की डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को कोई एक कंपोनेंट दिया जाएगा जिसकी आपको डिज़ाइन करनी है, बट मैंने एक ही एग्जांपल में आपको सारी डिटेल समझा दी है, राइट। सो आप लोगों को घर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग दिस चैप्टर या दिस example, then you can call me or you can also ask a question in a Google meeting. Thank you so much everyone for listening this lecture.